आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दी नज़्म व नस्ब पी नारायणा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के दो अहम शहरों विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में जारी मेट्रो रेल मंसूबे आइंदा 3 वर्षों के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश कैपिटल रेंज डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में दो याददाश्त अहम मफाहमत पर दस्तखत होने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। इन मुआहदों पर आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर NP रामकृष्ण रेड्डी और दो कंसल्टेंसी इदारे नाइप्सा और शिस्त्रा के माबैन दस्तखत हुए। मेट्रो प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर NP रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि इन मंसूबों से न सिर्फ शहरी नकल व हमल में बेहतरी आएगी बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। Regarding metro in Andhra Pradesh, actually it is there in Reorganization Act 2014. But in 2014-19 actually we planned this one. But Government of India at that time in 2017-18 actually we submitted the report to Government of India. But because of the last government totally neglected this project. But when this government came actually immediately we take up this one. And actually, yesterday in cabinet, actually we got approval for Visakhapatnam as well as Vijayawada metro. Yesterday actually, our people gave a tender for Visakhapatnam. Tomorrow or day after tomorrow, they are going to give a tender for Vijayawada also. This project will complete within 3 years. Visakhapatnam length is 46.23 kilometers with 42 stations. Total cost is around estimated is 11,498 crores. Visakhapatnam 46.23 kilometers, 3 corridors. Project cost is 11,498 crores. So tenders have been already floated and we are planning to complete in 3 years time. Vijayawada 2 corridors, 38 kilometers. So both the corridors we are planning to upload the documents on 28th. So NIT will be given on 28th. See, I already told you, every project, every metro project will have 100 to 150 general consultancy staff. So these staff, they will have 10 to 30 years experience in various